Question number 1. Sanskrit is part of a family of languages which is known as Option A Indo-European, Option B Indo-China, Option C Indo-Russian, Option D Indo-Dravidian. The correct answer is option A Indo-European. Question number 2. Which Veda is the oldest one? Option A Rig Veda, Option B Atharva Veda, Option C Yajur Veda, Option D Sam Veda. The correct answer is option A Rig Veda. Question number 3. The Vedic people are generally referred to as the Option A Dasyu, Option B Brahmin, Option C Vaishyas, Option D Aryans. The correct answer is option D Aryans. Question number 4. Dash is the assembly of selected persons of a tribe. Option A Sudha, Option B Samatai, Option C Samvita, Option D Sava. The correct answer is option D Sava. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न विथ एपी में। इस चैनल में आपको मिलेगा अलग अलग विषयों पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन एकदम केबीसी की तरह। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। आपके कितने उत्तर सही हुए यह हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको और किसी टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर सजेस्ट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप्स के साथ देखें और जाने कौन है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। तो आइए चलते हैं हमारे आज के क्विज की तरफ। Question number 5. People at dash ate fruits, cereals, and meat. Option A Lothal, Option B Namgaon, Option C Kolkata, Option D Mohenjo-daro. The correct answer is option B Namgaon. Question number 6. What is the language of the Vedas? Option A Urdu, Option B Pali, Option C Sanskrit, Option D Prakrit. The correct answer is option C Sanskrit. Question number 7. The Rigveda is divided into 10 dash. Option A Munds, Option B Mundic, Option C Mandals, Option D Mandalika. The correct answer is option C Mandals.
Question number 8. The Aryans had divided themselves into dash tribes. Option A 5. Option B 6. Option C 4. Option D 3. The correct answer is option A 5. Question number 9. How many types of epics are there? Option A 2. Option D 3. Option C 4. Option D 5. The correct answer is option A 2. Question number 1. Where in Mgaon is at present? Option A Punjab. Option B Kashmir. Option C Sanskrit. Option D Maharashtra. The correct answer is option D Maharashtra. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी तुरंत हमारे इस चैनल लर्न विद एपी को सब्सक्राइब करें। हमारा मनोबल बढ़ाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आपको और कौन कौन से टॉपिक पर ऐसे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें और देखें किसको कितना नॉलेज है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।